everyone and welcome back to Unique Academy. In today's class, we will continue with the enemy. I know it's a very long chapter. We have already covered almost 5, 6 or maybe 7 videos dedicated to enemy, and we still have 2 to 3 more videos coming up, but that's it. We are almost towards the end. Please keep your patience, and without wasting any more time, let's begin with our class. Begin with today's session. So in our previous class we covered the part where all the 3 servants were talking in front of Hannah about how their young master is so proud of his talent that he is ignorant towards the fact that the person he is operating on, treating, is a enemy. Okay? Now let's continue. As for Sadao, every day he examined the wounds carefully. The last stitches had been pulled out this morning, and the young man would in a fortnight be nearly as well as ever. Now Sadao continued to take care of the patient, to check him, not take care precisely, but to check him, his wounds, and finally today all the stitches are open. उसके टाँके कट गए हैं आज, ठीक है. And now as per Sadao's calculation, within fortnight, in 10 to 15 days, he will be as fine as he was ever. ठीक है, पहले की तरह एकदम ठीक हो जाएगा. Sadao went back to his office and carefully typed a letter to the chief of police reporting the whole matter. On the 21st day of February, an escaped prisoner was washed up on the shores in front of my house. So far he typed, and then he opened a secret drawer of his desk and put the unfinished report into it. And उस दिन जिस दिन उसने लास्ट स्टेजेस खोले, उसने चीफ ऑफ पुलिस के लिए एक रिपोर्ट टाइप करनी शुरू की, लिखनी शुरू की कि 21 फरवरी को मेरे घर के जो शोर है वहाँ पे एक prisoner of war आया, और उसने इतना लिखा था. He typed this much and then he again took the report and kept it in the secret drawer of his desk. On the 7th day after that, 2 things happened. अब वो इंसिडेंट होके ख़त्म हो चुका है. उसके जिस दिन स्टिचेस खुले थे उसने रिपोर्ट लिखी थी और उसे अपने सीक्रेट ड्रॉर में इनकम्प्लीट रिपोर्ट को रख लिया था. ठीक है, वो इंसिडेंट हो चुका है. नाउ ऑन द 7th डे आफ्टर दैट, राइट, 2 things happened. In the morning, the servants left together their belongings tied in large square cotton handkerchiefs. When Hannah got up in the morning, nothing was done, the house not clean and the food not prepared, and she knew what it meant. She was dismayed and even terrified, but her pride as a mistress would not allow her to show it. Instead, she inclined her head gracefully when they appeared before her in the kitchen, and she paid them off and thanked them all that they had done for her. They were crying, but she did not cry. The cook and the gardener had served Sadao since he was a little boy in his father's house, and Yumi cried because of the children. She was so grieving that after she had gone, she ran back to Hannah. ठीक है. Now again everything was going on the 7th day after all that incident. 2 things happened. First one is हम इस पैरा में हमने first thing cover किया कि जिस दिन सुबह उठी है ना, she observed that nothing is done. All the servants decided to leave the place, leave Dr. Sadao's work together. ठीक है, उन लोगों ने अपना सारा सामान एक स्क्वायर हैंकरचीफ में टाई अप किया, मतलब पोटली बनाई, and they decided to leave. Nothing was done when they woke up. No cleaning, no food, no breakfast, nothing. And Hannah understood what do it mean. भाई अगर servant से कोई काम नहीं किया, then it implies that they have decided to leave. Now she was being a mistress. How can she react in the emotion? मतलब how can she react in a way which is not respectful for her? ठीक है. So she did not cry. She in fact very gracefully paid her servants. जब servants kitchen में उसके सामने आए, she paid them जिनकी जितनी salary थी, and she did not cry. All the servants were crying. ठीक है, क्यों? क्योंकि cook and gardener were serving Sadao when he was a little boy. उसके father के टाइम से वो लोग काम करते आ रहे थे. And Yumi was crying cause of Dr. Sadao's children. She was taking care of his children, their children. She was so grieving that after she had gone, she ran back to Hannah.
ठीक है। वो इतना यूमी इतने दुख में थी बच्चों को छोड़ के जाने के कि वो जब चली गई तो वो फिर वापस दौड़ के आई रोते रोते हैना के पास। इफ़ द बेबी मिसेज मी टू मच टुनाइट सेंड फॉर मी, आई एम गोइंग टू माई ओन हाउस एंड यू नो वेयर इट इज़। यूमी कहती है कि अगर बच्चे मेरे लिए रोएं, ठीक है, तो आप प्लीज़ किसी को भेज देना, मैं आ जाऊँगी, मैं अपने घर पे ही हूँ, ठीक है। Thank you, Hannah said smiling, but she told herself she would not send for Yumi. However, the baby cried. अब हैना ने उससे तो बोल दिया थैंक यू कि तुमने इतना सोच रही हो एंड एवरीथिंग, बट बीइंग अ मिस्ट्रेस एंड बीइंग इन हर पोजीशन शी डिसाइडेड कि चाहे बच्चे कितना भी परेशान क्यों ना हो, मैं यूमी के लिए किसी को भेजूंगी नहीं। She made the breakfast and Sadao helped with the children. Neither of them spoke of the servant beyond the fact that they were gone. But after Hannah had taken morning food to the prisoner, she came back to Sadao. उस दिन हैना ने सारा काम किया, ब्रेकफास्ट वगैरह बनाया, एंड सदाओ हेल्प विद द चिल्ड्रन। दोनों ने कोई बात नहीं की बियॉन्ड द फैक्ट दैट सर्वेंट्स हैव लेफ्ट। बट आफ्टर सर्विंग द प्रिजनर हिज मॉर्निंग मील, सदाओ के पास हैना वापस आती है, अपने हस्बैंड के पास हैना। वाई इज इट वी कैन नॉट सी क्लियरली वॉट वी ऑट टू डू, शी आस्क्ड हिम। इवन द सर्वेंट्स सी मोर क्लियरली देन वी डू, why are we different from other Japanese? वो आती है and then after her morning chaos she come back to her husband and she says that why is it that we cannot see what we ought to do? हमें क्या करना चाहिए, ठीक है, हम क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? Are we different from other Japanese? Sadao did not answer, but a little later he went into the room where the prisoner was and said briskly, today you may get up on your feet. I want you to stay up only 5 minutes at a time. Tomorrow you may try it twice as long. It would be well that you get back your strength as quickly as possible. अब सदाओ ने हैना के क्वेश्चन का, हैना की बातों का कोई जवाब तो नहीं दिया, बट आफ्टर अ वाइल ही स्टूड अप एंड वेंट टू प्रिजनर्स रूम। वहाँ पे जाके उसने इंस्ट्रक्ट किया कि आज तुम खड़े हो सकते हो अपने पैरों पे। यू रिमेंबर हमारी लास्ट क्लास में ही स्कोल्डेड द प्रिजनर फॉर सेटिंग, ठीक है, बट अब वो खुद जाके बोल रहा है कि यू कैन स्टैंड फॉर अ वाइल नॉट मोर देन 5 मिनट्स, एंड कल इस टाइम को, इस ड्यूरेशन को बढ़ा सकते हो, एंड आई वॉन्ट कि तुम अपनी स्ट्रेंथ जल्दी से जल्दी रीगेन कर लो। He saw the flicker of terror on the young face that was still very pale. Okay, the boy murmured. Evidently, he was determined to say more. I feel I ought to thank you, doctor, for having saved my life. अब जैसे ही उस अमेरिकन ने ये सुना, ठीक है, देयर वॉज अ फ्लिकर, यानी एक मोमेंट्री लुक आई थी उसके फेस पे टेरर की, ठीक है, वो समझ गया भाई ये क्या कहना चाह रहा है, ठीक है, कि मेरे को कोई खतरा हो सकता है, दैट्स व्हाई आई नीड माई स्ट्रेंथ बैक। एंड ही वॉन्टेड टू से मोर, ही कंटिन्यूड दैट आई फील ऑट टू थैंक यू, कि मुझे आपको थैंक यू कहना चाहिए, आपने मेरी लाइफ बचाई है। डोंट थैंक मी नाउ अगेन, दिस इज सेड बाय टॉम द अमेरिकन प्रिजनर एंड दिस इज सेड बाय सदाओ, ठीक है, प्लीज़ मार्क कर लीजिएगा अपनी बुक में, आपको बहुत ईजी रहेगा एक्सट्रैक्ट्स के लिए भी और आगे रिविजन के लिए भी। डोंट थैंक मी टू अर्ली, सदाओ कोल्डली सेड कोल्डली। ही सॉ द फ्लिकर ऑफ टेरर अगेन इन द बॉयज आइज, टेरर एज अनमिस्टेकेबल एज एन एनिमल्स। द स्कार ऑन हिज वूंड नेक्स्ट वर क्रिम्सन फॉर अ मोमेंट। दोज स्कार्स व्हाट वर दे, सदाओ डिड नॉट आस्क, ठीक है, एंड उसके बाद सदाओ ने दोबारा जवाब दिया कि डोंट थैंक मी सो अर्ली, इतनी जल्दी मत करो मुझे थैंक करने की, थैंक यू कहने की कि मैंने तुम्हारी जान बचा ली। एंड विद दिस, सदाओ ने तो ये बात बहुत ब्लंटली कोल्डली कह दी, बट देन देयर वाज अगेन दैट फ्लिकर ऑफ टेरर, अगेन दैट लुक ऑफ टेरर ऑन दैट अमेरिकन फेस, ठीक है, एंड दोज मार्क्स ऑन हिज नेक वर turned into crimson color and Sadao never inquired about those marks. क्यों there was a flicker of terror? क्योंकि अगेन वो अपने एनिमीज़ के यहाँ था, ठीक है, ऑल इन ऑल वो एक एनिमी कंट्री में था, उसके ही वॉज अ प्रिजनर ऑफ वॉर, जान का खतरा तो उसे था ही। इन द आफ्टरनून द सेकेंड थिंग हैपन। अब हमने एक इंसिडेंट पढ़ लिया, क्या हुआ था, एक इंसिडेंट जब सर्वेंट्स चले गए थे, जब सर्वेंट्स चले गए थे। अब ये सेकेंड इंसिडेंट है, ये कब हुआ है, आफ्टरनून में। फर्स्ट इंसिडेंट हुआ था मॉर्निंग में। हैना वर्किंग हार्ड ऑन unaccustomed labor saw a messenger come into the door in official uniform. Her hands went weak and she could not draw her breath. The servants must have told already. She ran to Sadao gasping, unable to utter a word, but by then the messenger had simply followed her through the garden and there he stood. She pointed at him helplessly. ठीक है, अब आफ्टरनून में क्या हुआ, हैना वॉज नॉट accustomed to work so much, but she was working and while working she noticed a
messenger coming in official uniform in the dress of a police, ठीक है. He was coming in and Hannah went weak at the moment, ठीक है, instantly. क्यों? क्योंकि उसे लगा कि भाई सर्वेंट्स ने जाके हमारी बात शिकायत कर दी है पुलिस में. एंड शी ran towards Sadao, and by the time she reached Sadao, even the messenger followed her, and she was simply gasping, मतलब अपनी सांस के लिए जब हम हाँफ रहे होते, ठीक है, she was gasping for air and she simply pointed out towards the messenger. Sadao looked up from his book. He was in his office, the other partition of which was thrown open to the garden for the southern sunshine. Sadao कहाँ पे थे इस वक्त? अपने ऑफिस में थे, घर का जो ऑफिस है. What is it? He asked the messenger, and then he rose, seeing the man's uniform. उन्होंने पहले मैसेंजर से पूछा क्या बात हुई, और उसके बाद उन्होंने नोटिस की उसकी यूनिफॉर्म, ठीक है, और वो खड़े हो गए. You are to come to the palace, the man said. The old general is in pain again. Oh, Hannah breathed. Is that all? All, the messenger exclaimed. Is it not enough? Indeed it is, she replied. I am very sorry. अब मैसेंजर कहता है डॉक्टर सदाओ से कि आपको आना पड़ेगा, ठीक है, जो हमारे जनरल हैं, ओल्ड जनरल हैं, वो काफ़ी दर्द में और काफ़ी तकलीफ में. यू हैव टू कम एंड चेक हिम. And Hannah was expecting something else. She was scared for something else. So she took a relief and she said, "Oh, बस इतनी सी बात है. Is that all?" And messenger was kind of shocked, kind of baffled. इतनी सी बात है, हमारे इतने respected, इतने important general pain में है, और ये इसे इतनी सी बात लग रही है. So this is said by this is said by the messenger. This is said by Hannah, and this is again said by messenger. Indeed it is, she replied. I am very sorry. This is again by Hannah. When Sadao came to say goodbye, she was in the kitchen but doing nothing. The children were asleep and she sat merely resting for a moment, more exhausted from her fright than from work. And जब डॉक्टर सदाओ पैक करके अपना सामान पैलेस जाने के लिए, अपना सामान पैक करके उसे गुड बाय कहने के लिए, अपनी वाइफ हैना को गुड बाय कहने के लिए आए, तो ही नोटिस की हैना इज सिटिंग फॉर अ मोमेंट एंड शी इज टायर्ड मोर ऑफ द एग्जॉस्शन ऑफ ऑल द फ्राइट, मतलब ऑल द फियर, एंड she was terrified, she was afraid, and she was more exhausted of that fear than of work she was doing. ठीक है, although उसे काम करने की आदत नहीं है, तो वो काम करके भी exhausted थी, but उससे ज़्यादा उसे थकान किस बात की थी? इस डर की कि कहीं सर्वेंट्स ने जाके बता ना दिया हो, कहीं पुलिस उन्हें पकड़ के ना ले जाए. I thought they had come to arrest you, she said. Now she finally says कि भाई उसे किस बात का डर था, क्या लगा था उसे कि ये लोग तुम्हें अरेस्ट करने के लिए आए हैं. He gazed down into her anxious eyes. I must get rid of this man for your sake, he said in distress. Somehow I must to get rid of him. And now Dr. Sadao look into her eyes, ठीक है, he notices his wife's eyes and he says that I must get rid of this man for your sake. ठीक है, her eyes are full of exhaustion, fear and anxiousness, ठीक है, and that's why Dr. Sadao feels that he need to get rid, mostly cause of all the tension Hannah is having. ठीक है, he must get rid of that man. Which man? The American soldier. That's all. We'll continue it in our next class, and within a day or two we'll complete this entire chapter.